appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Publicity or then Senior Counsel or Mr. Prashant Bhushan, then Counsel. Mr. Vijay Hansaya, will this full stop. We accordingly issue the following directions: (1) the Registrar Judicial of this court shall ensure that the data which has been filed by ECI in pursuance of the interim orders of this court is scanned and digitized. Full stop. Upon the process being complete, this may be preferably carried out during the course. It may be carried by during the course of the day tomorrow, by 5 p.m. tomorrow. Full stop. Once the above exercise is completed, the original shall be returned to Mr. Amit Sharma, then counsel appearing on behalf of the ECI. Full stop. ECI shall then upload the data on its website within a period of on or before, day after. A copy of the digitized may also be given, so it will not take time in a copy of the, yes, fair enough. A copy of the digitized files shall also be made available. Sorry, Malad. Please. They filed an application which is disposed of. They are not parties. But really speaking, we can take exception to what they have disclosed.
to SBI, returnable on Monday. We'll keep it on Monday. Very well. Keep your flags. Would like to. A copy. My lord, may I mention, my lord? Mr. Agarwal, just a moment, don't interfere. Ji. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Council appearing for SBI. May I request, my lord, one thing? Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request, your lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my lord, till Monday. I hope, my lord, I can convey myself. There we तो अब आपको आवाज आ रही है? चलिए, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। और देखिए, आपका प्यार है कि आप बगैर आवाज के भी 1000 लोग जो है वो सुन रहे हैं। तो ये जिस तरह से अब आपको आवाज आ रही है मेरी, और वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच गई, हम लोग चर्चा करें। एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपके पास लेकर के आया हूं। तो बड़ी खबर जो है वो इस वक्त मैं आपके पास में लेकर के आया हूं, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है एसबीआई को, और एसबीआई को बताना पड़ेगा, एसबीआई को बताना पड़ेगा, अब कोई नाटक नहीं चलेगा किसी प्रकार से। कोई भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई बहाना लगाया जाता तो बहाना भी नहीं चलेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एफिडेविट जो है वो भरवाया गया है। तो बड़ी खबर, चुनाव आयोग को जो है वो जानकारी सौंपनी पड़ेगी, और चुनाव आयोग ने भी एक और लिस्ट जो है वो सामने रखी है, और उस लिस्ट के जरिए किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ और चीजें निकल करके सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की हर जानकारी दे। सीजीआई बोले कि आपका रवैया ठीक नहीं है, 21 मार्च तक हल्फनामा दे करके बताए, कुछ छिपाया नहीं है। तो ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कुछ छिपाया नहीं है, ये जानकारी जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो अब सब कुछ जो है ठीक है, दुरुस्त है, मेरी आवाज भी आप तक सही पहुंच रही है, सब कुछ जो है ठीक है, हम इस पर जो है वो चर्चा कर सकते हैं। आवाज सही आ रही है अब मेरी? चलिए, तो दोस्तों थोड़ा माफी चाहूंगा कि आज शुरुआत में थोड़ा सा चीजें होच-पोच हो गई, अक्सर हो जाती हैं कई बार, लेकिन माफी चाहूंगा, लेकिन आगे से दुरुस्त करेंगे। चलिए, तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तगड़ी फटकार एसबीआई को, और एसबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन के अंदर एसबीआई को बताना पड़ेगा जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं, जो बॉन्ड के ऊपर हैं, जिसके द्वारा यह पता चल पाएगा कि किसने किसको बॉन्ड दिया है, सीरियल के हिसाब से। तो सीरियल के हिसाब से जो है वो बताना पड़ेगा कि आप ये कौन सी जानकारी छिपाने का काम कर रहे थे। आप जो है वो कौन सी जानकारी छिपाना चाह रहे हैं, और आपको एफिडेविट में यह भी बताना पड़ेगा कि हमने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। मतलब कि आप देखिए, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बुरी तरह से फंसा दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के लिए कह दिया है कि आप ना केवल जो है वो जानकारी देंगे 3 दिन के अंदर अंदर, बृहस्पतिवार तक, गुरुवार तक जो है आपको जानकारी देनी पड़ेगी,
बल्कि आपको यह भी कहना पड़ेगा कि हमने सारी जानकारी दे दी, हमने कुछ नहीं छिपाया है। तो मतलब अब 3 दिन का वक्त बाकी है। इस 3 दिन के अंदर अंदर देश को यह पता चल जाएगा कि कौन सा पैसा किसके द्वारा आया, कैसा आया, और सारी जानकारी। अब एसबीआई अपने पास कुछ नहीं रख पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एफिडेविट लगवा दिया। इस एफिडेविट का मतलब क्या है, ये जरा समझ लीजिए। देखिए, पिछली बार जब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब फटकार लगाई थी तो कहा था कि एफिडेविट भर करके जाइए कि हम 15 मार्च से पहले पहले ही चुनाव आयोग के पास में डाटा भेज देंगे, और वैसा ही करना भी पड़ा। चुनाव आयोग के पास में एसबीआई को डाटा भेजना पड़ा, और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार का एक ऐसा असर हुआ, एक दिन पहले ही वो डाटा रिलीज कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई को फिर से कि आप एफिडेविट भरिए, आप एफिडेविट भरिए, और एफिडेविट भर करके कहिए कि हम सारा का सारा जो डाटा है, वो जो भी हमारे पास में है कि कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, किसने दिया है, वो सारी जानकारी वो हम पेश कर देंगे। हम कहीं से कोई जानकारी जो छुपाने का काम नहीं करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर इसका एक तकड़ी जो है वो फटकार एसबीआई को लगी है। और अब एसबीआई के पास में ना कोई बहाना है, ना एसबीआई के पास में कोई रास्ता है। खैर, मैं आपको खबर जो है सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको खबर बताता हूं। आप खबर समझ लीजिए कि कैसे जो है वो एसबीआई ने जो है टालने की पूरी कोशिश की, और फिर उसके बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ साथ कि अभी तक जो हमारे पास में डाटा आया था, वो डाटा जो है वो 2019 के बाद का था। 2019 से लेकर के अभी तक का डाटा हमारे पास में था। लेकिन अब जो है वो क्लियर डाटा जो है वो सारा का सारा देना पड़ेगा, और एसबीआई कुछ नहीं छिपा पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ में यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं देने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को नोटिस जारी किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से 18 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर जवाब मांगा था। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। सीजीआई ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने आपको कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लेकर के आइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की बात थी, इसमें जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, हमारे आदेशों का इंतजार ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बहुत सीधे तौर पर जो है इस बात को कहना पड़ा है एसबीआई को कि आप किसी प्रकार से जो है वो अब जानकारी छिपाने का काम नहीं करेंगे। अब बार बार ये भी जो है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आकर के इस बात को नहीं कहेंगे कि आपने नहीं कहा था साहब, इसलिए हमने ये जानकारी नहीं दी। आप सारी जानकारी बताइए। आप ये बात कहिए कि हमने कौन सी जानकारी मांगी और कौन सी जानकारी नहीं मांगी है। आपके पास में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, उस जानकारी को सौंपिए। ये बात जो कही गई है। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन किन जानकारियों को खुलासा करना है, और वो जानकारियां देंगे। एसबीआई के रवैये से तो यही लग रहा है कि ये उचित नहीं है, और कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि आप 21 मार्च शाम 5 बजे तक एफिडेविट भी दाखिल कीजिए कि कोई जानकारी आपने छिपाई नहीं है। तो ये जो देखिए बड़ी क्लियर जो स्टेटमेंट है, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि आप जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम आपको बताएं कि आपको कौन कौन सी जानकारियां देनी है, और उसके बाद में आप जो है वो फिर जानकारियां देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद से जो है वो जानकारियां देनी पड़ेंगी कि हमारे पास में ये जानकारियां साहब, आपको जो चाहिए रख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम आपको बताएं कि हमें ये जानकारियां चाहिए और उसके बाद में आप जानकारियां देंगे। ये जो है बात कही गई है। अब बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और कैटेगरी की जानकारी साफ देने का जो है वो निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने वालों को कैश कराने की जानकारी दी थी। डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर से इसका पता चलेगा।
तो अब जो है वो जो ये यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर क्या है, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के ऊपर यहां पर जो है वो एक नंबर है, जो नंबर नंगी आंखों से आप हम जैसे देखें कि मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो बॉन्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस बॉन्ड को आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी बॉन्ड के नंबर से खुलासा होगा कि कौन सी जानकारी किसकी है और किसने दी है, और उसी से जो है फिर चीजें साफ हो पाएंगी। एसबीआई बॉन्ड का नंबर जो है वो खुलासा करें, एक हल्फनामा भी दायर करें जिसमें लिखा हो कि एसबीआई ने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या सवाल जवाब हुए और किस तरह से क्या क्या जो है कहा गया। लेकिन सीजीआई ने कहा कि आप एक एफिडेविट दाखिल करिए और एफिडेविट दाखिल करके कहिए कि हमने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। अब मुकुल रोहतगी जो कि एसबीआई की तरफ से पेश हुए, मुकुल रोहतगी बहुत पुराने वकील हैं, सरकार के सबसे बड़े वकील, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं फिक्की की तरफ से आया हूं और हमने एप्लीकेशन फाइल की है। सीजीआई ने कहा कि ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे पास में नहीं है। तो उसके बाद में रोहतगी की तरफ से कहा गया कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स नंबर के संबंध में है, जब हमने इस पर फैसला दे दिया है इसके बाद में आप आ रहे हैं, अभी हम आपको नहीं सुन सकते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए ये जो मैं लैंग्वेज आपको बता रहा हूं ये पूरी वो लैंग्वेज है, ये वो शब्द है जो जज साहब ने वहां पर कोर्ट में जो है वो कहे हैं, वकील को फटकार लगाते हुए, सरकार के जो है तरफ से पेश हुए जो एडवोकेट थे उनको फटकार लगाते हुए कहा। मैथ्यूज ने कहा कि जनता की पीठ में छुरा, जनता की पीठ पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया। सीजीआई ने कहा कि मुझसे चिल्ला करके मत बोलो, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो, हम आपको सुन नहीं रहे हैं। ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। सीजीआई ने कहा कि मुझसे चिल्ला करके बात मत करो और आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करिए, हम यहां पर सुनवाई कर रहे हैं। इसके बाद में एससीबीए अध्यक्ष हैं आदिश, उन्होंने रिव्यू के लिए दायर की गई याचिका पर जो है वो ध्यान खींचने के लिए कहा। तो सीजीआई ने कहा कि आप एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप एससीबीए के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको प्रक्रिया का पता है, आपने मुझे एक चिट्ठी भेजी, यह पब्लिक के लिए, यह सब पब्लिसिटी के लिए है, इसे यहीं छोड़ते हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो तगड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की तरफ से लगाई गई। सीजीआई ने कहा है कि आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं और आपने मुझे एक चिट्ठी लिखी है और ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए आप कर रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब जो है खासे नाराज जो इस पूरे मामले पर दिखे और सीजीआई ने कहा कि हमने पिछली बार एसबीआई को नोटिस भेजा था, फिर हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई की ओर से मैं आया हूं। चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि हमने कहा था कि सारी डिटेल सामने लाइए, इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी, इन जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सेलेक्टिव ना रहे, हमारे आदेशों का इंतजार ना करें, हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ में ईमानदार रहेगा, आपके पास में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी जानकारी है उसे सामने लेकर के आइए। आगे सीजीआई कहते हैं कि एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन किन जानकारियों को खुलासा करना है और वो जानकारियां देंगे। एसबीआई के रवैये से तो लग रहा है कि ये उचित नहीं है। आगे फिर सीजीआई कहते हैं कि जब हमने आपसे कहा कि डिटेल्स, तो इसमें सारा डेटा शामिल है। हरीश साल्वे की तरफ से जो कि बैंक की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको बता सकता हूं कि एसबीआई ने ऑर्डर किस तरह से समझाया है, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। देखिए थोड़ा सा लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि पहले तो एक और एप्लीकेशन इस मामले पर आ गई। हरीश साल्वे जो है वो एसबीआई की तरफ से पेश हुए थे, हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे के अलावा आज जो है कोर्ट में फिक्की की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हो गए। मुकुल रोहतगी भी सरकार के, आप वकील कह लीजिए, सरकार के सॉलिसिटर जनरल भी रहे, तो वो फिक्की की तरफ से पेश हुए। और उसके अलावा एसबीआई बैंक की तरफ से
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे। और हरीश साल्वे जो है वह चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब कोई नया जो है फटकार लगाते हुए नया जो है आदेश पारित ना करें, इसलिए उन्होंने कहा, टाइम खींचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं कि क्या क्या जो है वो हमारे पास में जो हमने डिटेल दी है उसमें कैसे कैसे है, किस किस तरह से है। मतलब कि कुल मिलाकर के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट को वो जो है बताना चाह रहे थे। और ये बात जो है वो टाइम खींचने के लिए हरीश साल्वे ने अपनी तरफ से कही। थोड़ा साउंड कम करिए आप, साउंड कम करिए। तो ये बात जो है वो हरीश साल्वे की तरफ से कही गई वहां पर। और इसके बाद में सीजीआई ने इस पर कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास में है। हरीश साल्वे की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि 2019 में भी आपने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि राजनीतिक दलों से जुड़ी चंदे की जानकारी बंद लिफाफे में दी जाए। चंद्रचूड़ साहब इस पर काउंटर करते हैं कि हम यह मान रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से जिरह नहीं कर रहे हैं। हरीश साल्वे जवाब देते हैं कि हम अगर बॉन्ड्स में नंबर हैं तो वो भी हम आपको देंगे। देखिए यहां पर जो एसबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो बच करके निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप पहले भी कह चुके हैं एसबीआई को, चुनाव आयोग को, कि आप जो है वो जितनी भी जानकारी है चंदे से जुड़ी हुई वो बंद लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। किस किस पार्टी को चंदा जो है मिला है, ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तब भी ये जो है मामला निकल करके सामने आया था। और तब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जोर देकर के कहा गया था कि आप जो है ये जानकारी, ये सारी जानकारी आप जो है वो पेश करिए। और उसके बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने एसबीआई के तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे को एक तरह से फटकार लगा दी। फटकार लगाते हुए कहा कि आप ये बताइए कि आप बैंक की तरफ से हैं या आप किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से हैं। आप राजनीतिक पार्टी की तरफ से बात मत करिए, आप बैंक की तरफ से बात करिए। देखिए मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द निकल करके आ रहे हैं, सीजीआई के जो शब्द होते हैं, उनमें मैं अपने शब्द नहीं जोड़ सकता हूं। इसलिए जो वहां से जो चीजें निकल करके आ रही है मैं वैसे ही हूबहू आपको बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं समझाने के लिए तो आपको कह सकता हूं, लेकिन उनमें तोड़ मरोड़ जो है मैं आपको नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको झूठ करके बताया जाए। तो मैं आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं बताऊंगा जो मेरी तरफ से हो। एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो बातें हुई हैं ये बहुत गहरी बात है कि एसबीआई के वकील को, जो एसबीआई बैंक जानकारी सामने नहीं रख रहा है, अगर एसबीआई के वकील को सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि आप एसबीआई बैंक की तरफ से आए हैं तो बैंक की तरफ से बात करिए, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से बात मत करिए। फिर उसके बाद में हरीश साल्वे के जो तेवर है वो थोड़े से उनको लगा कि मामला जो है वो फंस रहा है और सीजीआई जो है सख्त है। उसके बाद में उन्होंने अपने आप को डाउन कर लिया और अपने आप को डाउन करने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है सर, जो भी जानकारी आप मांग रहे हैं वो जानकारी हम आपको देंगे। अगर बॉन्ड के अंदर नंबर हैं तो वो नंबर भी हम आपको देंगे। ये सारी जो आप साइड में जो विजुअल देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपसे कुछ देर पहले हुई हैं। अंग्रेजी में पूरा वार्तालाप है, ये भी मैं आपको आगे सुनवा दूंगा। और इसी में से जो सुनवाई के अंदर जो बातें कही जा रही हैं, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रशांत भूषण आपको नजर आ रहे हैं, कपिल सिब्बल इसमें आपको नजर आ रहे हैं, और हरीश साल्वे जो है वो वर्चुअली इसमें जुड़े हुए थे। तो ये जो जानकारी है, इसके बाद में जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की तरफ से कहा गया कि हमें बताइए कि एसबीआई ने खरीद के वक्त किस फॉर्मेट में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जमा किया था। ये जो है वो बड़ी बात पकड़ ली। यहां पर चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि आप ये बताइए जिस वक्त में आपने बेचे थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जो आपने डेटा वहां पर जमा किया, जो खरीदारों का जो डेटा था जो जमा किया, वो किस फॉर्मेट में था। क्या आपने वो वर्चुअली जो है उसको सबमिट किया, ऑनलाइन सबमिट किया, या मैनुअली जो है उसको सबमिट किया। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई इसी बात को कहता रहा कि डाटा बहुत ज्यादा है, डाटा बहुत ज्यादा है,
और ये डाटा जो है वो हम लिख करके भेजते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है नस दबा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि डाटा है किस फॉर्मेट में आपके पास। तो जवाब आता है बैंक के वकील की तरफ से, हरीश साल्वे की तरफ से, कि उस वक्त में हम पर गोपनीयता का दबाव था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है वो सीजीआई कहते हैं कि किस फॉर्मेट में सेव किया था ये बताइए। मतलब हरीश साल्वे फिर बचने की कोशिश। देखिए, वकीलों का काम ही बचना होता है, और एसबीआई ने हरीश साल्वे को खड़ा किया है, तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसे ही नहीं खड़ा किया कि वहां पर एसबीआई जो है पहली के सुनवाई के अंदर सब कुछ हार जाए। वकील जो है अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करके बार बार जो है खींच करके जो है वो बात को लेकर के चलते हैं। लेकिन सीजीआई ने चीज को पकड़ लिया और सीजीआई कह रहे हैं किस फॉर्मेट में जमा किया था वो बताइए। तो फिर उसके बाद में जवाब आया, 2 फाइल्स में डेटा को सेव किया गया था, बॉन्ड नंबर सिर्फ बॉन्ड पर था, ये केवल यूवी लाइट में दिखता है। तो जब ज्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर किया, तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने वो हरीश साल्वे को कहना पड़ा कि सर हमने 2 फाइल के अंदर डाटा सेव किया था, 2 फाइल में, और जो बॉन्ड नंबर है वो बॉन्ड के ऊपर होता है, और वो नंबर जो है वो नंबर आपको यूवी लाइट, यूवी अल्ट्रावायलेट जो है वो अगर रोशनी होती है तो उसी के अंदर वो नंबर दिखता है। जैसे ये नंबर है, ये नंबर आप ऐसे ही देख पाएंगे यहां पर, ये मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ 12 अप्रैल 2019 मैंने लिखा है। लेकिन इस नंबर को अगर आप देखना चाहें, इस नंबर को जो है वो अगर आप ये कहें कि मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूं, तो बॉन्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है, बॉन्ड का यूनिक नंबर, वो नहीं दिखेगा। अब समझिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने फिर आगे कहा कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है या इससे ऑडिट भी किया जा सकता है। मतलब कि ये जो नंबर आपने छिपाने का काम किया है कि इसको जो है सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या सिक्योरिटी फीचर के लिए किया गया है या इससे ऑडिट भी किया जा सकता है? हरीश साल्वे कहते हैं कि ये सिक्योरिटी फीचर है, ऑडिट ट्रेल अलग से है। समझ गए आप बात को? यहां पे आगे सुनिए, आपकी कोई भी ब्रांच का नंबर मिलान करते वक्त यह कैसे तय करती है कि ये बॉन्ड फर्जी नहीं है? तो हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि ये एक नोट की तरह से है। मतलब कि हरीश चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि आपने जो ये नंबर वगैरह बना दिया, बॉन्ड बना दिया, आप कैसे मानेंगे कि ये बॉन्ड अगर कोई आपके बैंक में लेकर के आएगा तो उसको कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई अडानी साहब का बॉन्ड है और अडानी साहब ने 1000 करोड़ रुपए जो है उस बॉन्ड के ऊपर लिखा कि 1000 करोड़ रुपए, हालांकि 1 करोड़ रुपए का वैसे एक बॉन्ड होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो 1000 करोड़ रुपए जो है एक बॉन्ड पर जो है वो अडानी पेश कर दे और अडानी जो है वो बीजेपी को दे दे, और बीजेपी जो है वो दोबारा कैश करवाने के लिए बैंक में जाए, तो कैसे चेक करेंगे कि ये बॉन्ड असली है कि या नकली है? क्योंकि कोई भी ऐसे कॉपी बना करके और जो है उसका अगर कैश करवा लेगा तो एसबीआई फिर कैसे पैसा देगा? तो उन्होंने कहा कि नोट की तरह से, जैसे अपनी करेंसी होती है 20, 30, 50 का नोट या 100, 200 का नोट जो भी होता है, उसी की तरह से है। उसी की तरह से है कि जैसे नोट में जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं वैसे ही इसमें भी सिक्योरिटी फीचर है, और इस सिक्योरिटी फीचर के तरह से जो है वो हम इसमें चेक करते हैं कि फर्जी नहीं है। चंद्रचूड़ साहब आगे कहते हैं कि जब आप अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करते हैं तो आपको कौन सी जानकारी मिलती है? हरीश साल्वे ने कहा कि इनका आपस में संबंध नहीं किया गया है। आगे चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड की जानकारी भी सबके सामने रखे, आप एक एफिडेविट भी दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं है। ये जो है वो आखिरी सवाल पूछा गया और इस सवाल का बहुत विस्तार से जवाब दिया गया है हरीश साल्वे की तरफ से, बैंक की तरफ से जो वहां पर वकील थे उनकी तरफ से बहुत लंबा जो है इस पर जवाब दिया गया है। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे,
हम हर वो जानकारी देंगे जो हमारे पास में है। हम कोई जानकारी नहीं छिपाएंगे। हम बोर्ड नंबर भी देंगे। वोटर्स की जानकारी में ये भी बात हो कि ये अगर मसला है, अगर फिर याचिकाएं दाखिल की जाती हैं तो हम इसकी जांच करें कि इसकी जांच करो, इसकी जांच करो। तो मुझे लगता है कि अदालत के आदेश का मकसद ये नहीं है। मीडिया हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, पिटिशनर भी हैं और इन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए। देखिए साहब, क्या होता है कि जब आप खुद फंस जाए ना तो आप ये कहते हैं, मैं आप एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, अब वो बात नहीं बता रहा हूँ जो है कोर्ट के अंदर कही गई है। देखो दोनों चीजों को मैं अलग अलग करके लेकर चल रहा हूँ। अब जब आप खुद फंस जाते हैं और जब आपकी चोरी साबित होने लगती है कि आप चोरी कर रहे थे, आप चोर हैं, या आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त में आदमी के पास में एक ही तरीका होता है अपने आप को जो है वो बेगुनाह साबित करने का, या अपने आप को पाक साफ जो है दिखाने का। वो तरीका होता है ये बताने का कि देखो सर, केवल मैं चोर नहीं हूं, वो भी चोर है, ये भी चोर है, इसने भी किया है, उसने भी किया है। तो मतलब वो बात को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं और वो इस बात को जो है बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं ही केवल जो है बेईमान नहीं हूं, यहाँ पर सब बेईमान। तो मतलब ये सब बेईमान जब हो जाएंगे तो फिर वो जो गुस्सा है या वो जो कार्रवाई होनी है या जो जुर्माना लगना है, जो पेनल्टी लगनी है, जो भी कुछ होना है, वो फिर सब पर चला जाएगा। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो घुमाने की कोशिश की जा रही है। अब जो कोर्ट की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट में हरीश साल्वे कह रहे हैं कि हम सारी जानकारी बताने के लिए तैयार, हम बता देंगे कि हमारे बॉन्ड के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर भी हम बताने के लिए तैयार हैं। हम जो है कोई जानकारी नहीं छिपाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी जो है देनी चाहिए, तो हम वो सारी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद में जो है, लेकिन आप एक काम और करिए, जो मीडिया ट्रायल हमारे ऊपर हो रहा है या मीडिया के अंदर जो हमारे हमको लेकर के जो खबरें दिखाई जा रही कि एसबीआई जो जानकारी छुपा रहा है, या जिस भी तरह से आप कह लीजिए इसको, उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए। इश्यू नोटिस टू एसबीआई, मतलब गजब बात है। आप जानकारी नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार रहा है, और वो खबर जो है कोई मीडिया में दिखाए भी नहीं। मीडिया मतलब अब सोशल मीडिया ही केवल दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कहां कितना कवर कर रही है आपको पता है। तो ये सारी चीज जो है वो निकल करके सामने आती है, और ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो है जानकारी छिपाने का काम किया गया। और अब उसके बाद में कोर्ट ने चंद्रचूड़ साहब ने आखिरी लाइन जो ठोक दी, और उन्होंने कहा कि एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एफिडेविट दाखिल करें और बताएं कि हमने सारी जानकारी दे दी है और इसके साथ साथ कोई जानकारी छिपाने का काम नहीं किया है। तो बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है कि एसबीआई जो है वो एफिडेविट देगा। एसबीआई एफिडेविट देकर के कहेगा कि साहब माई बाप, हमने कुछ नहीं छिपाया है और हमने सारी जानकारी दे दी है। आपके मतलब की थी, आपके मतलब की नहीं थी, हमारे पास में जो जानकारी थी हमने सारी दे दी है। अब आप इसमें से देख लीजिए कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। देखिए ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और किसी सर्वे के अंदर आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लोग बीजेपी से खुश हैं या बीजेपी से नाराज है। ये किसी जो है वो खबर में नहीं बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हंगामा इस वक्त में खड़ा हुआ है, जिस तरह से लोगों का गुस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के फूट रहा है, सरकार के ऊपर, एसबीआई के ऊपर जो गुस्सा फूट रहा है, अभी देखिए 31 मार्च आने वाला है। 31 मार्च जो है वो आने वाला है, और 31 मार्च को क्या होगा? 31 मार्च को ये होगा कि सबको अपनी इनकम टैक्स जो है वो भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ेगी। आदमी जो है कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, सारी जानकारी आदमियों को देनी पड़ती है, आम नागरिक को देनी पड़ती है। जो भी महिलाएं काम करती हैं, जो भी पुरुष काम करते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं। लेकिन सरकार कहां से पैसा लेकर के आ रही है, सरकार को कौन पैसा दे रहा है, सरकार उस पैसे को कहां खर्च कर रही है, ये बताने के लिए क्यों नहीं तैयार है? मतलब कि आप जो है, अगर किसी के पास में 5 लाख रुपए भी अगर इधर से उधर मिल जाए, आपको किसी के पास में 1 लाख 2 लाख रुपए का भी अगर आपको इधर उधर जो वेरिएशन मिल जाए कि आपने जो जानकारी दी थी और उस जानकारी से 2 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, या इसका हिसाब किताब मिल नहीं रहा, तो उस वक्त में
उस वक्त में जो है वो बैंक जो है, या माफ कीजिए बैंक नहीं, उस वक्त में इनकम टैक्स की तरफ से आईटी के इनकम टैक्स की तरफ से जो है, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर पेनल्टी या उसके ऊपर जवाब जो है उसको दाखिल करना होता है। लेकिन सरकार ने पैसा कहां से कमाया, सरकार को पैसा कौन दे रहा है, सरकार जो चुनाव में पैसा खर्च करेगी, अभी जो हेलीकॉप्टर आप देखेंगे, हेलीकॉप्टर जो उड़ेंगे और जो चार्टर्ड प्लेन से इधर से उधर नेता जाएंगे, तमाम अलग अलग जो है वो नेता, मंत्री, संतरी, सांसद और जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता या किसी और पार्टियों के जो फायर ब्रांड नेता हैं जो घूमेंगे, तो क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियों को बताना चाहिए, क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहिए कि हमारे पास में कहां से चंदा आ रहा है, हमारे जो हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं वो हेलीकॉप्टर किसके पैसे से घूम रहे हैं, क्यों नहीं ये जानकारी जो है लोगों तक देनी चाहिए। और यही जानकारी नहीं दी जा रही है, ये जानकारी छुपाने का काम किया जा रहा है, इसीलिए लोगों का गुस्सा जो है फूट रहा है। तो मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो है वो बड़ा आज जो है वो बीजेपी के ऊपर आप कह सकते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि एसबीआई मतलब अब क्या है, एसबीआई कोई अपनी लड़ाई जो है वो, हाँ आधिकारिक तौर पर अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से देखें तो एसबीआई एक सरकारी बैंक है और सरकार को जो है वो डिफेंड करने का काम कर रहा है। परसेप्शन यही है एसबीआई को लेकर के, इस वक्त परसेप्शन यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि बैंक सारी डिटेल लोगों के पास में रखे, बैंक जो है वो लोगों को बताने का काम करे। तो ये जो है वो एसबीआई की तरफ से, और आज जिस तरह से सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में जिस तरह से जो बड़ा खुलासा निकल करके सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एसबीआई को जैसे फटकार पड़ी है, एसबीआई को जिस तरह से फटकार पड़ी है, तो वो फटकार निश्चित तौर पर ये एसबीआई को अब जो है वो कोई रास्ता बचा नहीं है, एसबीआई के पास में कोई रास्ता बचा नहीं है। और मैं आपको अभी सुनवाने वाला हूं कि थोड़ी देर पहले जो है वो एसबीआई के अंदर जब सुनवाई एसबीआई को लेकर के सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहां पर क्या कुछ कहा गया वो जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सीजीआई और वहां पर वकीलों के बीच में, सीजीआई और वकीलों के बीच में जो संवाद हुआ है वो मैं आपको सुनाने वाला हूं, और उस संवाद को सुनिए आप, और एक एक चीज जो है वो किस तरह से वहां पर हुई है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी फटकार जो सरकार को लगी है। एक एक अगर वहां पर सुनेंगे कि किस तरह से फटकार लगी है। और चंद्रचूड़ साहब देखिए दिल जीत लिया है, देश के लोगों का दिल जीत लिया चंद्रचूड़ साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह से फटकार चंद्रचूड़ साहब लगा रहे हैं, अगर जो है चंद्रचूड़ साहब नहीं होते तो शायद मुमकिन नहीं था। देखिए मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, 100% नहीं, क्या पता, और उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि चंद्रचूड़ साहब के बाद में जो सीजीआई आएंगे वो इनसे भी और अच्छा काम करें, क्योंकि जिस तरह से न्यायपालिका जानी जाती है कि कोई भी हो सामने, कितना ही ताकतवर आदमी हो या कितना ही कमजोर आदमी हो, सबके लिए न्याय समान होगा। तो उस चीज को अगर सच साबित किया है तो वो चंद्रचूड़ साहब ने सच साबित किया है। और अब मैं आपको सुनवाऊंगा और आप साउंड भी जो है वो देखेंगे और उन्हीं की आवाज में जो है सुनने का काम करेंगे कि किस तरह से जो है वो पूरी जो है वो यहाँ पर बातें निकल करके सामने आई है। और अब से थोड़ी सी देर में जो टीम है हमारी वो इस चीज को ठीक कर रही है, और जहां से जो सुनवाई शुरू हुई है वहां से लगाइए, जहां से सुनवाई शुरू हुई है, जहां पर जो है वो सीजीआई आए हैं, और सीजीआई आने के बाद में जब कोर्ट में हियरिंग जो है शुरू हो गई है, वहां से जो है वो सुनवाइए। तो ये देखिए आप कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो है वो चंद्रचूड़ साहब अगर नहीं होते तो सोचिए इतनी बड़ी खबर जो है वो आप तक शायद नहीं पहुंची होती। अगर चंद्रचूड़ साहब नहीं होते तो शायद मुमकिन नहीं था कि हम जो है वो ये देख भी पाते कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, ये शायद हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि न्यायपालिका को लेकर के। और इससे पहले देखिए आप किस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दे करके वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये जो चीजें थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन करके उभरा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी खास तौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब, उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने जो सुनवाई की है, हालांकि ये कुछ अगर 2 महीने 4 महीने पहले अगर हो जाती तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में बहुत नीचे तक बातें जाती, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है, और बीजेपी जो है फंस गई इस मामले के अंदर, और बीजेपी कुछ भी जो है वो इस वक्त में अपने बचाव में कुछ कह पाने के लिए जो है तैयार दिखाई नहीं दे रही है। और करीब करीब जो है वो 30 से 40 मिनट तक आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जिरह हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट की बहस मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, बस अब से कुछ ही देर में वो बहस जो है वो भी आपको सुनवाऊंगा। तो आप जरा अगर सब कुछ तैयार है तो आप आवाज खोलिए और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसको सुनिए आप। But Lord, I am respectfully submitting. Sorry, appearing for big clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my But court. Lord, if your Lordship make an order today, my application will be infructuous. I am saying kindly defer the issue of grant of alphanumeric. Mr. Rodgi, you are aware about the proceedings going on. You could have intervened at that stage. What is this after the judgment is passed? You want to intervene now? My Lord, the order is of 15th March. Ask No, me, but Lord. you are aware about the proceedings pending before this But court. Lord, we were not Arguments are parties going on anywhere. together. We were not parties at any time. Everybody, the whole Lord, world the knew order that is this of matter was 15th being March. heard. Lord, I have You are aware about the proceedings Come pending here before after this the court. judgment is we were not delivered. parties anywhere. Now, We were not parties at any time. That's not the way. Lord, I have come only in regard to 15th March. Kindly appreciate. I have no problem in declaration of the list of donors or the list of recipients. Mr. Rodgi will not hear you right now. We have a specific application which is on board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll get it. No. I am saying No, kindly, Lord, If I do it for Mr. Rohatgi, senior No, no, counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. What's sauce for the goose is sauce for the I am gander. not mentioning, I am not appearing in the matter and making a submission. We have no such application on board before us. Lord, I have brought it with me. I've made myself. My lord, the entire, I have emailed entire judgment One has, second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rodgi. Yes. no, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. Mr. 1 second. Yes. 1 second. This 1 judgment is second. void. Please listen to me. You are It is- not, 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. Please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship of it in says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative do not, process at all. please, once we have said no, please move the application by email. What your lordship says. Do not continue and persist. दोनों पूरी खोल के I रखो। only said it was not a representative proceeding. You are, All the way coming from Kerala. you are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. The entire judgment is against, behind the back of these people. Parliament has been rendered Please, irrelevant. that's all, that's all. We heard that, please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you follow the procedure prescribed. My lord, we are filing it. Please do, We are filing it. please do, we'll consider it afterwards. Yesterday That's at it. 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Have not- Be kind to us. Be last- kind to That's us. all, please, we will not hear that. In Please democracy. call for the application, please follow the application. My lord, may I mention, my lord, my petition for so moto that is pending, whatever lordship want to do, that do only, I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you're the president of the SCBA. Yeah. You should know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo moto jurisdiction. Yes, yes, my lord. No locus to mention So anything. that I should not You disturb have to lordship. restrict what you We have should not waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why.
Lord, Only that. These are all publicity-oriented stunts. We will not permit it. Handmade of a. Whatever Please, lordship feel better. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. Please close it. Members of the bar who are Mr. senior to your lordship. Majumdar, it is enough now. Also senior to your lordship. It is enough. Justify your old man, Lord. Be kind to us, later. We are very polite and begging with your lordship. Your lordship has a soft language. Majumdar, we have been telling you that you are interfering, you are obstructing us. No. सीजीआई ने हड़का दिया है। सीजीआई कह रहे हैं कि ज्यादा मत बोलिए, आप एक पद पर हैं, उसका भी सम्मान करिए। Yes, Pala. Yes, hearing now. We issued notice on the last occasion to State Bank of India. Mr. Kapoor, you are appearing? You are appearing for Mr. Salve is also there. for the State Bank? That's right. Yes. But I appear for the State Bank. Yes. Mr. Salve, in Yes. our order which we, in the judgment which we delivered, we had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So, But I, let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers, and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court. Malad, I just, whatever your lordship say, if your lordship say bond numbers, you can disclose the bond number. There's no problem. But tell us Somebody one can thing, screen them. And why has the SBI not disclosed? I wanted to, Malad, tell Malad how we understood your lordship's judgment. Give me 5 minutes. Only to explain our conduct. We'll, of course, if your lordship say give anything more, everything will be given, but there's no question. SBI's attitude appears to be, you tell us to disclose a particular detail and we'll disclose it. That's not fair process. Malad, how we understood. The SBI requires, this is the judgment of the Supreme Court. As chairman of the State Bank of India, I'm duty bound to comply with the judgment. I will disclose every part of the information which is in my custody as directed by the Supreme Court. Because when we said all details of the purchases, that means every conceivable detail which is available with State Bank of India. And we clarified by saying including. That should be, I mean, State Bank of India has the best legal advice open to it. May I, Malad, take your lordship through the 3 orders, so how we understood them? Malad, your lordship's first order was 12th April 2019. ये हरीश साल्वे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हरीश साल्वे हैं ये, और ये बार-बार जो है वो सीजीआई को कह रहे हैं कि हम खुलासा करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे। और सीजीआई कह रहे हैं कि आपको खुलासा करना चाहिए, आप हमारे ऑर्डर का इंतजार मत करिए। 12th April 2019 order in paragraph 16. But I had asked my friend to make a little compilation of the orders so we could show them easily. Your lordship has not. Yes, para 17, right? Para 16, Malad. 16. You got this? Yes. Yes. This is the interim order my lords had been pleased to make. After Malad noting all the changes, the court would have to ensure that any interim arrangement that may be made would not tilt the balance in favor of either of the parties, but the same ensures adequate safeguards against the competing claims of the parties which are yet to be adjudicated. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require. Can you just see para 15 again? Yes. The court therefore has to ensure that any interim arrangement that may be made would not tilt the balance in favor of either of the parties, but the same would ensure adequate safeguards against the competing claims of the parties which are yet to be adjudicated. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require all political parties who have received donation through the electoral bonds to submit to the Election Commission of India and seal cover
detailed particulars of the donors against each bond. The amount of each such bond and the full particulars of the credit received against each such bond, namely the particulars of the bank account to which the amount had been credited and the date of each such credit. So, my lord, your lordships felt this would ensure transparency, that you give all this, but you keep it in a sealed cover. So, my lord, a political party doesn't need bond number. If a political party comes and says, I have received so much from so and so, that gives the requisite details. We take it you're not arguing a case for a political party, right? No. On the contrary, For the state I'm saying the reverse. I'm so sorry, I'm saying the reverse. But if a political... Para 16, Mr. Salve, was relating to the political parties who had to submit the data to the election commission. Correct, and they have. And this has... No, that's a separate issue. Whatever they have declared or not declared, that's a separate issue. But as far as the judgment of this court is concerned, because you were supposed to... I'm coming in a minute. If your lordship will just give me 1 minute, how we understood it. Para 16, as my lord has therefore noticed, only required the political parties to give all these details. And these details have been given, my lord. If they have not been given, that's between the ECI and the political parties. As my lord, the Chief Justice said, I'm not preparing for a political party. Then, my lord, para 17 was the mechanism. Your lordship said details will be furnished in respect of electoral bonds, the details of such bonds that may be received by a political party up to a date for issuing such bonds as per the ministry, that is February 19, will be submitted on or before 3rd of May 19. The seal covers will remain in the custody of the ECI. So, my lord, we had no role to play. Your lordships had put this mechanism in place. In your lordship's judgment, your lordships dealt with the diverse aspects, including the need to preserve some degree of anonymity, and your lordships will not mark that in para 125, where your lordships discuss the electoral trust as an alternative to this system. And in the conclusions, which are at para 218, if your lordships have the compilation, would be PDF page 76. Yes. Your lordships will not say we direct the disclosure of information. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है वो सीजीआई को कि ये बताने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आवाज उनकी बंद करिए, मैं थोड़ा समझा दूं दर्शकों को। हो गया? हाँ, तो ये सीजीआई इस बात को कह रहे हैं कि आप जो है वो ये बताइए कि आप नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जो बॉन्ड्स के नंबर है वो क्यों नहीं दे रहे हैं, आप किसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं यहां पर, और आप क्या किसी पार्टी की तरफ से हैं या बैंक की तरफ से हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस वक्त में, ये हरीश साल्वे हैं, हरीश साल्वे जो कि एसबीआई बैंक को इस वक्त में उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। देखिए, टॉप लॉयर लगाए गए इस वक्त में सरकार की तरफ से, एसबीआई की तरफ से, इस वक्त में अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टॉप लेवल के जो लॉयर हैं उनको लगाया गया है। तो ये जो है बहस अभी इस वक्त में चल रही है, सुनिए जरा। Election Commission and sealed cover particulars of the donors against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. The details will be furnished forthwith in respect of electoral bonds received by a political party till date. The details of such other bonds as may be received up to the date fixed for issuing such bonds, including February 19, May 19, will be submitted on or before May 19, and the seal covers will remain, etc. Then your lordships clarify, para 14 does not limit the operation of 13. 13 contains the direction in unequivocal terms to political parties to submit particulars of contributions received through electoral bonds to the ECI. Para 14 only prescribes the timeline for the submission
on the contributions when the electoral bond should be done. In view of the interim order, the ECI must have collected particulars of contributions made to political parties through electoral bonds. In view of our discussion, the following directions are issued. The issuing bank shall stop issuance of bonds, which was done immediately. The SBI shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order by the court till date to the ECI, fully given, Manoj. Details shall include the date of purchase of each bond, the name of the purchaser, and the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. All these details are given. SBI shall submit details of the political parties which have received contribution through bond since the interim order till the date of the ECI. SBI must disclose each electoral bond encashed by the political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the bond. Now, as we therefore understood this, the political parties have come and said, we have received so much from so and so. The details which we will give will make the database complete so that we have who purchased, when he purchased, and when they have got. If the numbers are to be given, we'll give them. There's no problem. So, according to us, the data. Mr. Salve, I have a few questions. First, yes. Tell us in what format is the data on the purchase and redemption of electoral bonds stored by the SBI? So, as I had explained in the application which we filed, because at that time we were functioning under the edict of anonymity, which had not been stayed. So, at that time we were directed to preserve anonymity, including we had to take measures that within the bank. What is the format in which you maintain the data on purchase and redemption of electoral bonds? In what format do you store it? In 2 silos. Your Lordship noticed that in the next order. So the data is maintained in 2 silos. You store it in 3 silos. From your application, it emerges now that you do it in 3 silos. The first silo is the bond number. The bond number is only on the bond. And the third is the redemption. My lord, bond number is only on the bond, and it cannot be read except through under a UV light. That was only done, my lord, like authentication, because it was a bearer bond. That's what was sought to be. What's the purpose of the alpha? And second question, what is the purpose of the alphanumeric? The alphanumeric is the bond number which is visible only under a UV light. Is it only a security feature, or is it a security feature entirely? In the audit trail, do you also? No, my audit trail is separate. That's why we do the entire KYC. In the KYC, we have a bond unique number. It's not the bond number. You have a marker number of a client. Third question: yes. How does the redeeming branch? Yes. How does the redeeming branch? Yes. Match the electoral bond number to determine that it is not a forged bond? So they were not. That's what I'm saying. When they received it, the person encashing it gets it. He sees that it's a valid bond because you see the security feature. You don't keep a record of it. The physical inspection. While redeeming it, the only way you can ensure that it is not a forged bond is to match the alphanumeric. Without there's nothing to match. It's like seeing a currency note. It's like seeing a currency note. You know that's the alphanumeric. Yeah. But cashed in the last 15 days because it's only valid for 15 days. So therefore, they will have to also match when was this bond. I think Mr. Bhushan should hold his peace for a minute. Fourth, what is the information that you see when you scan the alphanumeric? Malad, you see a number. The details of the purchaser and the bank which issued the bond when you scan the bond? No, Malad. That's what I'm saying. That correlation was not kept for the reason it's like this. Mr. A or Mr. B come and buy the bond. So they go to branch A. They do the entire KYC information is done, their bank account details, etc., everything is done. That is silo 1, if one may so call it, which is nothing near Lordship's order. That's been fully disclosed. That bond finds its way into the hands of some political party. We don't know who gives it, how it goes, how many hands it changes. It finds its way in it. We next get to see the bond when somebody comes and says. Mr. Salve, assuming that you construed our order based on the interim order merged with the final judgment of our court. Malad, even in the final judgment. Say that we will interpret our final directions in the light of the interim order, which has merged with the final judgment. Malad, your lordships. All details. That's why we came to my lord. Mr. Salve, we'll clarify to put it beyond any. No problem. No problem at all. We will say that now SBI will not only disclose the bond numbers, but it shall also file an affidavit again before our court saying that you have not suppressed any, you will not withhold any details in regard to this
within the purview of clause B and C of para 221. Correct. I don't think there's anything else which remains. But Details, you have to disclose all details. Let there be no, because the burden should not lie upon the court or the petitioners to say, but this one has not been disclosed. But now this has not been disclosed. now we'll disclose it, Malad, whatever. We must have finality to it. Yes, we'll do it, Malad. There's no problem. Just that this constant, Malad, the media constant beating down and the petitioners giving public interviews saying, we will take the state bank to task and we will show this and we will haul them up for contempt, etc., etc. But we are also public institutions working in this space. And it's all right. People work, people acted on the faith of this. Your lordships granted an interim order saying keep records. It wasn't at that time, Malad, subject to correction. I didn't find any order which says all further actions will be subject to the judgment or something. There was no such direction. Your lordships are at that balancing interim order. Now, whether completely you should lift the privacy or remove anonymity, better your lordships will. Mr. Salve, the idea behind the interim order was, in case the writ petition is allowed, then Yes. data should come out. And that's what exactly is required. Nothing more. I must say so, Malad, as out of whatever Malad, the Chief Justice is saying, your lordship will clarify. We will give every bit of information, relevant, not relevant. We'll give every bit of information which we have. So that, Malad, there should be no feeling that SBI is interested in somehow holding something back. I only want, Malad, to share one thing. Malad, your lordship's judgment is one of the leading judgments on the subject on transparency, voters' rights, and balancing democracy, balancing the competing virtues of and trying to minimize the role of money while recognizing the role of money in elections, etc. It goes over a lot of subjects. The one thing the lordship's judgment was not meant for, possibly, and not designed for, is to give birth once again to a now dormant PIL industry, which will go after each industrialist and say, investigate this, investigate this, investigate this, investigate that. And the idea is the voter should know, which is absolutely, and my lord say, give the bond numbers, we'll give the bond numbers. The voter knowing is one thing, but this as fodder for the next 10 years to have PILs saying investigate so-and-so, investigate so-and-so. That is, I don't think, the purpose of your lordship's judgment. That was not what it was meant for. And your lordship will see whatever safeguards need to be put in place. Just one more Lord, thing. I have 2 minutes, my lord, if your lordship permits. At the outset, my lord, on behalf of the central government, I completely disassociate myself with what Dr. Agarwala has written. It is completely unwarranted and ill-advised. I want that to be made very clear, my lord, on behalf of the central government. Now, my lord, I have something to share, and I have been watching this very painfully, my lord, outside the court. My lord, your lordships sit in kind of a silos. Your lordships are, my lord, in an ivory tower, not, my lord, in a negative sense of the term. But what we know here, my lord, your lordships never come to know. The way in which your lordship's judgment is playing out, my lord, something your lordships must, my lord, be informed as highest court of the country. But what has happened? My lord, our case was that we want to curb the black money. A criminal may have paid the donation, but ultimately the donation comes in the white economy and we could not persuade your lordships. Lord, your lordships passed a judgment. Lord, every one of us understood the judgment and the directions in a particular way, that what your lordship wants is not, my lord, kind of a witch hunting. Earlier, my lord, our case was that witch hunting would be by the political parties. If A party is given, B party in some other state might victimize the donor. Now, my lord, the witch hunting has started, my lord, at some other level, my lord, not at the governmental level. The application comes of the SBI before your lordships on 11th of this month, my lord, and your lordships also, my lord. That's how, my lord, we understood, clarified the position. But most serious things, my lord, start happening thereafter. Lord, those before the court started giving press interviews, deliberately embarrassing the courts, my lord, and there is, Lord, a non-level playing field. My lord, on this side, nobody can rebut that. Neither government can do, nor state bank can do, nobody else can do. Thereafter, my lord, a series, a barrage of social media posts, my lord, at least intended to cause embarrassment, started during these 2 days.
And thereafter, my lord, now it's anybody's field. It's an open field. My lord, statistics, your lordships are aware, can be twisted in any manner the person wants. It's a matter of, my lord, intelligence of the reader to understand. Now, my lord, based upon the twisted and other statistics, my lord, any kind of, my lord, posts are being made. I know, my lord, your lordships cannot control that. The question is, would your lordships, my lord, consider issuing a direction which has a necessary and inevitable fallout, which the court would not be able to control? My lord, that saying Mr. Rohgi gave this money to this, then they have their own conclusion. Mr. Solicitor, we are only concerned about enforcing the directions which we issued in clauses B and C of para 221. That's As judges, we decide according to the Constitution. correct, my lord. We are governed by the rule of law. We are also the subject matter of comment in the social media and the press. But surely, as an institution, our shoulders are broad enough. No, I'm saying, I'm We not, are- my lord, we are- for a Our second saying. court has an institutional role to play in a polity which is governed by the Constitution and the rule of law. That's the only job. Lord, my purpose is to inform your lordships that there is something else playing out which neither your lordships intended nor the scheme intended. And, my lord, kindly bear that fact in mind. On 11th of March, my lord, we thought that we are ad idem, that this information would help the voter to take a call whether to vote in favor of a particular party or not. My lord, thereafter, this started in a very systemic. All right. Order. We just, One fact. can I assist you? Lord? No, Mr. Rodgi, we don't need assistance right now at the conclusion of the matter. Just One give me a fact, minute, Lord. one fact. I am the person who's going to. be Lord, they have no stakes in the matter. Forget my application. No, Mr. Rodgi, we'll not hear you when your application, we have to follow procedure in the court. It's a constitutional court. One will allow Yes, us. Mr. Rodgi, Say no, something. Mr. Rodgi. I told you the reason for it. We are now at a stage when the I am judgment not is. on my application, not that it become infirmable. Sir, I am Mr. now Rodgi. only saying No, that. Mr. Rodgi, we don't need any assistance at all. We are clear. We had very able assistance on both sides. We don't need any third party I assistance. meant, Lord, Your lordship I- didn't get a one proper second, please. assistance. So just one The thing. grievance of those who will now be deemed that you have given to A party, you have given to B party, that will be. Lord, one more clarification. What we did that we gave to the government under a scheme. Mr. Rodgi, there's only one simple answer. Yes. With effect from the 12th of April 2019, when we directed the collection of all details, everybody was put on notice that hereafter, the details which you furnished would be subject to the result of the petition. No problem in. Therefore, in drawing the balance, we did not ask for the disclosure of details prior to the interim order of the court. Absolutely. And that was a very conscious and well thought out decision of the Constitution bench. Was it the intention of the court to know which man paid where, so that if he pays A party, he will be subject to victimization of B? Answer is yes. The answer is yes. Not that I can't tell you. Lord, only one line, my lord. Only one line, my lord. Mr. Bhushan may, my lord, now hold his horse. Pursuant to your. He has done, my lord, substantial assistance. I don't have to formally disassociate myself with today's mentioning, my lord. That my disassociating from Mr. Agarwal doesn't mean that I am. Mr. Solicitor, irrespective of the Yes, my lord. Yeah, but maybe treated as my lord. We must just tell you that we respect this very responsible approach which the Solicitor General has adopted of, because, clients apart, who you are representing apart. The It is institution has really to stand above painful, my lord, when the people before the court start, my lord, Thank a you media campaign thank you for to saying that. embarrass the judges. Thank you for saying that you It's don't very, my lord, associate painful. with the mentioning. Thank you for saying that you don't associate. Because with the there is no level playing field. I can't hold a press conference. Only grievance is that it was not a justiciable issue. Yeah, Solicitor General did not raise it. It is not a matter of pure policy. I read the entire judgment. It was entirely a policy issue. It is not justiciable at all. That's all I want to say. The people of this country feel that a decision was taken behind their back. When the parliament decides, they were present in the parliament. It is with their consent. When your lordship decides, we are. Last order, the election commission has put out the sealed covers but that's very interesting that those sealed covers show that some of the smaller parties have disclosed the donors.
We don't have to go into No, all but that, because- Mr. That's because- not our remit at all. No, no, What has happened after the judgment is not something we are concerned not with after at the all. judgment. What I'm saying, Now, no, what I'm saying is this, that since the order of the, very recently, I was asked about about a critique on a judgment. I need not mention which judgment. And I said that, look, it's no part of the role of a judge, least of all of a constitutional court or even a civil judge, to defend their views. Once we declare a judgment, it becomes public property. It's the property of the nation. It's the property of the nation. And no, I was only saying that your lordship's interim order of April 2019 asked the political parties to disclose the name of the donor. The information given by the political parties to the Election Commission, only a few of the political parties, the smaller regional political parties, some of them have disclosed. He is not the names of addressing the your donors. lordships, he is addressing somewhere else. Kindly hear him for some time. Correct. So that it comes, my It's lord, in the amazing, newspaper amazing. tomorrow, that Mr. Prashant Bhushan Amazing. vehemently said this. That's Amazing. the purpose. I'm Solicitor, pointing out unfortunately, something. public interest litigations have now become publicity interest litigation. It is Absolutely. publicity interest litigation. I It am is, my lord, pointing there out are some hidden agendas. something. There is no doubt, my lord, and I am not, my lord, apologetic in saying. I'm astonished. And that is the matter of greatest concern, because judgments given, my lord, for high constitutional principles then are used for purposes other than what they are delivered. Unfortunately, Lordships, in your lordship's majesty, So what would I'm not pointing know, my out- lord, what are the hidden agendas behind it. just dictate a short order. I I think, just we point are out that unnecessarily expanding upon the remit. Because the major political parties have not disclosed the donor. Just give us 2 minutes to dictate the order. Therefore, what all that I'm requesting is that the disclosure of the details of the bonds should actually start from the beginning of the issue of the bonds, not just from the interim order, because this is leading to a situation. 1 second, we got the point. You filed an application on that. In our order. They have filed an Just, Mr. Ansari, just 1 moment. Do it in a very cool and calm atmosphere. It's a constitutional adjudication. Yes. Right? In our interim order, we said that the disclosure shall be made with effect from the date of the interim order. Yes. 12th of April 2019. Yes. Right or wrong, we have taken a conscious decision that the cutoff will be the date of our interim order. And we also explain why we took that date. We said after that date, of course, the Constitutional Bench has an option to go all the way back from the date of the bond or from the date of the judgment, some place via media, some via media in between. We took 12th of April 2019 because it was our considered view of all of us five that once that interim order was pronounced, everybody was on notice, what we told Mr. Rodgi. Now we have maintained that if you want that to go back to 2018, that's in the nature of a review of the judgment. So the only reason why I'm saying that. Modify that date. No, the only reason, because your lordship asked the political parties to give donor details to the Election Commission prior to that interim order. And while some of the political parties have given donor details, other political parties have not given donor details. The major political parties have not given donor details. And one political party, which is in power in one of the states, says, if somebody came and left it under our door, 10 crores of electoral bonds was left under our door, we don't know who it was. So therefore, I am saying that because this is leading to a situation, though your lordship asked the political parties to disclose donor details by that interim order, only some political Mr. parties. Bhushan, we have understood that argument, but what we are directing, once the numbers are given, it will sort out a lot of problems. A lot of your issues will But for that period of 2018 till Oh, that will. April we are not sitting in a 2019, review. We have taken a conscious decision. we are Please faced file with a review. situation where the Mr. Bhushan, this will really be a substantive modification of the judgment. We can't do it like this in a miscellaneous application. no. And In the light of the disclosure which has come to light of the political parties, that's why I'm saying. it was not a If the casus political belli. parties had disclosed the donor details, this would not be required. Draw the line somewhere, we had to hold the balance. We've held the balance ultimately. As your at lordship 2/12. pleases, but I just. Can I just add one sentence? Lordship said all the details, Lordship may consider, my lord. I have pointed out that 6 details may be necessary, my lord. One is the serial number, because they say 28,030 bonds have been issued. The second would be the date. 1 second. When you say serial number, you mean the alphanumeric, Total right? number of bonds issued are 28,030. I'm not saying
When a lordship said all details, my lord, in my respectful submission, it will be. Mr. Sarve has been. No, my lord, lordship, just permit me a minute. Sarve has fairly stated that he will all the details. Why? Yes, yes, ma'am. No, my lord, if I can just show. And data all are already Consider what your disclosed. lordship would say, my lord. I'm just pointing out what details can be there. First is serial number. Second is the date. The third would be alphanumerical number. Fourth column would be name of the donor. Fifth column would be the name of a political party. And sixth column would be the amount. My lord, this will cover all the details, my lord, in my respectful submission. My lord, this is now asking us to sit down and collate one This with is a the other. submission made to the court. Just like Mr. Salve made a submission to the court. I'm making. Yeah, we need. Very well. I'm making a submission to the court. Mr. Salve asking us to do whatever. Look, Please permit my lord the Chief Justice to dictate the order now at least. Secondly, my lord, the lordship said, lordship has seen that IA, my lord. I filed that IA. For a preview order, if a lordship have taken a conscious decision on that aspect of the matter, my lord, lordship may say, my lord, because the order said, my lord, the voters are entitled to know as a right of information. If a lordship have taken a conscious decision on that matter, my lord, it will be from 12th of April only, because we said, my lord, it should be, my lord. Otherwise, logically, once the right to know, my lord, is inbuilt in the system, and in right to know of the voter. Very well, I'll leave it at that. And there is a specific direction with effect from 12th April. Then your lordship said, my lord, I will not press the application. So Bhujan, there will be no end to it. What is the IA number, Mr. Ansariya? Just 1 second, Mr. Bhujan. IA number which you are not pressing is IA number? Diary number 12580-2024. Which is MA number, MA diary number. So that you are not pressing. Yes, my lord. Just Just one, say MA by way diary of number information on 580-2024. Mr. Vijay Hansaria, Learned Senior Counsel, appearing on behalf of the applicant, states after some submissions at the bar that the miscellaneous application is not pressed. In view of, my lord, whatever proceedings have gone to the court, in view of the proceedings before. In view of whatever. Lord, if your lords, you can say that. Otherwise. In view of what? In view, we'll say, in view of the specific directions contained in paragraph 200, in paragraph 219, bracket B and C of the judgment of this court dated 15 February 2024. just one fact by way of information. Enough of assistance by this public spirited person, my lord. Your lordship doesn't need any further assistance. The details of the number of bonds shown by the, in the data. He is gathering the details for a future PIL, my lord, so that bonds, remains in, he remains relevant. Now, please permit my lord the Chief Justice to dictate the order. Heard everybody, Mr. I was just pointing out that there is a huge mismatch between the number of bonds purchased and the number of bonds encashed in the data submitted by the State Bank to the Election Commission. They are showing 18,871 bonds purchased, but showing 20,421 bonds redeemed. The total amount of bonds purchased is 12,155 crores, and the amount redeemed is 12,769 crores, that is 550 crores more than what were purchased. Now the explanation for this could be because the data is from 12th April. At that time, the bond purchase was going on. On 12th April 2019, it was going on. What is possible is that some of these bonds were purchased prior to 12th April 2019, but redeemed after 12th April 2019, and that is why there is a mismatch. But I just wanted to point out there is a very large mismatch. There is no, my lord, these figures are not authentic. I've given the authentic 18,000 versus roughly 22,000 sponsored NGOs are, my lord, fudging the figures and bringing their own. My lord, your lordships are aware, there is a beautiful, my lord, quotation by Einstein that some people use statistics like a drunken man uses lamp posts more for support than for illumination. I'm just showing the number. I'm saying that 18,000. This is what happens when now leave it at that. Those numbers are not right. Since, my lord, because all this is going to play out, the numbers are not right. The corrected numbers were not given in our application. वो अलग order pass कर देंगे. इसमें एमए में ऐसा लिख लीजिए. In subpara B and C of paragraph 221 of the judgment of this court dated 15 February 2024, the direction to the SBI to submit details of bracket 1, the electoral bonds purchased, semicolon, and bracket T 2,
political parties which have received contributions through electoral bonds is specifically since the date of the interim order dated 12 April 2019. Stop. In other words, all details which have been directed to be furnished in the operative directions of this court are with reference to the interim order, are on the basis, don't say on the basis of, are with effect from the date of the interim order, namely 12 April 2019. Full stop. The relief which has been sought in the MA for predating the point of disclosure would amount to a substantive modification of the judgment and hence cannot be dealt with in a miscellaneous application. Full stop. The miscellaneous application is therefore not maintainable and is accordingly dismissed. I want one more relief to prevent another round of contempt proceedings. Would your lordship just for a minute have my affidavit in compliance for? What is it that you want to clarification? Yes. Marat, there was, when we gave your lordship, that's why I can see all this story has started. When we gave your lordship the original figure of 22,217 bonds, we had, by mistake, that was from 1st of April, not on 12th of April. If your lordship just sees para 4 and Marat, everything will be over because I know where this is going, where Mr. Bhushan is going. Please see para 4 of my compliance affidavit for 1 second. Yes. And please, I would invite your lordship to say, your lordships accept this. We have given the figures, Marat. There is no mismatch, there is nothing of the sort. The total, if your lordship sees the table. I'm not going to all that. I mean, No, I have to convince my lord I have complied with the order. I'm just saying. It's a compliance affidavit. It's a compliance affidavit of your chairman and managing director. We have accepted that. Please say your lordships have accepted our compliance affidavit. That will put an end to all this. By the judgment of this court dated 15 February 2024, this court directed, into inverted commas, this court directed, into inverted commas, the disclosure of information on contributions received by political parties under the electoral bond scheme to give logical and complete effect, into inverted commas, complete, to the ruling. Full stop. Thereafter, in paragraph 219, this court issued operative directions. These directions in subparagraph B and C are in 2 parts. Full stop. Subpara B requires SBI to submit details of the electoral bonds purchased since the interim order dated 12 April 2019, into inverted commas, till date to the ECI, into inverted commas, complete. Such details, the court has indicated, into inverted commas, shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased, into inverted commas, complete. In the second part of the operative direction, in subpara C, SBI was required to submit, into inverted commas, the details of political parties which have received contributions through electoral bonds, into inverted commas, complete, since the interim order dated 12 April 2019 till date to ECI. Full stop. SBI was required to disclose details of each, underline each electoral bond encashed by political parties, and to include inclusive of the date of encashment and the denomination of the electoral bond. Full stop. The above narration and a plain reading of paragraph 219 of the judgment dated 15 February 2024 indicates that SBI was required to submit all details, both in terms of the purchase and in terms of the receipt of contributions. Full stop. The expression, to invert commas, include in both subparagraphs B and C clearly demonstrate that the inclusive part was
regarded as illustrative and not exhaustive of the nature of the disclosure which was to be made by SBI. Let's stop in other words, we now, there's no manner of doubt that SBI is required to make a complete disclosure of all details in its possession. Full stop. This, we clarify, will include would comprehend the alphanumeric number of, and the serial number, if any, of the bonds which were purchased and redeemed. Full stop. The application, this was on your application, I think you had moved this, no? The application was by the Oh yeah, we had therefore. Mr. Harish Salve, Learned Senior Counsel, states that there is no reservation on the part of SBI in disclosing all details which are in its possession and custody. Full stop. In order to fully effectuate the order and to obviate any controversy in the future, we direct that the Chairman and Managing Director of SBI shall file an affidavit on or before 5 p.m. on Wednesday. अभी ऐसा करना कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है stating, yes, that certainly 5 p.m. on Thursday, indicating that SBI has disclosed all details of the electoral bonds which were in its possession and custody, and that no details have been withheld from disclosure. Full stop. B and C are in two parts. तो ये पूरी सुनवाई आज रही और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है वो एसबीआई को तगड़ी फटकार लगाई है, और एक बार नहीं कई मौकों पर इस तरह से जो है वो फटकार लगी है आज एसबीआई के वकील हरीश साल्वे। और देखिए कोर्ट के अंदर जो हुआ है उस चीज को भी आप समझिए, कोर्ट में किस तरह से जो है वो दलीलें दी गई हैं। कोर्ट में जो है प्रशांत भूषण जब दलील दे रहे थे एसबीआई के खिलाफ, तो उस वक्त कहा गया कि ये प्रशांत भूषण जो है वो फ्यूचर में दोबारा से कोई पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं, और इसीलिए जिन चीजों का इस केस से कोई मतलब भी नहीं है उनको भी लाया जा रहा है। इसके बाद में प्रशांत भूषण ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि कोई हमारे दरवाजे के नीचे से डाल गया, ये जो है वो कहा गया है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से। दरअसल वो एक अपने आप में बड़ी खबर है, मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। जेडीयू ने कहा कि 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड कोई लिफाफे में डाल करके वो हमारे दरवाजे के नीचे से डाल करके चला गया। यहां पर कोई 10 रुपए अगर कहीं पर मिल जाए तो आदमी जो है देखता है कि 10 रुपए किसने डाल दिए, किसके हैं, कैसे हैं। 10 करोड़ रुपए ऐसे आ गए। तो ये सारी बातें, फिर उसके बाद में साफ तौर पर आखिरी में जो है ये कहा गया कि आप लोग जो है ये बताने का काम करेंगे, और कि क्या जो है वो इसमें सीरियल नंबर आप बताएंगे, डेट आप बताएंगे, अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर हैं वो आप बताएंगे, नेम ऑफ डोनर जो जिसने चंदा दिया है उसका नाम बताएंगे आप, और उसके बाद में जो पार्टी को चंदा गया है उसका नाम भी आप बताएंगे। और उसके बाद में जो है वो बार बार जो वकील सरकार की तरफ से थे या फिर एसबीआई की तरफ से जो भी वकील थे वहां पर, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि हमें जो है वो डिफेम किया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया के अंदर इस चीज को लेकर के प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि जजों को लेकर के जो है प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, तो इन सबको रोकने का काम कीजिए। तो सीजीआई ने उन चीजों को जो है वो इग्नोर किया। सीजीआई ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एसबीआई की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम भी बाहर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हमें जो है वो एम्बैरसिंग फील करवाया जा रहा है। तो ये सारी बातें, और फिर उसके बाद में आखिरी में एसबीआई को ये कहना पड़ा कि जो भी हमारे पास में जानकारी है, चाहे वो रिलेवेंट है चाहे नहीं है, हम सारी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना यही इंतजार जो है वो 21 मार्च को शाम 5 बजे का है। बहरहाल आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े रहे, कई बार कुछ टेक्निकल दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और इतना साथ देते हैं, तो वो जिम्मेदारी फिर हमारी बन जाती है। मैं भी फिर जो है वो आप ही के साथ में यहाँ पर और जो है वो 24 घंटे बैठने की कोशिश करता हूँ कि इसी चीज में आप ही के लिए जो है वो अपने आप को खपाऊं।
बहरहाल आप लोग अभी भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचा करके जरूर जाइएगा। आप लोग अपना 2 मिनट 5 मिनट का समय और निकालिए और इस खबर का जो लिंक है वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग पेज पर जो है इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये खबर, ये जो बातें हैं जो हमने अभी की है और काफी लंबे वक्त तक, करीब करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, हम जो है वो जुड़े रहे साथ में, और जो चीजें, जो जानकारी आप तक पहुंची है वो और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए इसलिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।